आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो जिस बंदे का है उसका नाम है लॉस्ट इन द पॉन्ड। अच्छा ये एक फेमस चैनल है और इसके कई वीडियोस हम पहले भी देख चुके हैं। अच्छा ये बंदा पहले ब्रिटेन में रहता था, अच्छा अब अमेरिका शिफ्ट हो चुका है। तो दोनों के बीच के फर्क बहुत अच्छे से ये बताता है। अच्छा और आज की जो वीडियो हम इसकी देखने जा रहे हाँ। हैं उसका टॉपिक है कि कुछ ऐसी आवाजें, अच्छा कुछ ऐसे साउंड्स अच्छा जो आपको अमेरिका आने के बाद सुनाई देने को मिलेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को देखें, समझें और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। क्या साहब के ये देखने में ये आया कि हर जगह का अपना साउंड अलग होता है। अब जैसे कोई आवाज गाँव में गए तो वहाँ चिड़ियों का चीजें जाएगी ना, बकरे को में करना, गाय भैंसों का एक करना। शहर में आओ तो कहीं हवाई जा रहे हैं, तो कहीं ट्रेन की आवाज़, तो कहीं गाड़ी घोड़ों की आवाज़। तो क्या है साहब के हर जगह का अपना साउंड अलग ही होता है, एक अलग ही पहचान होती है कि हम कहानी कहाँ गए, कहानी कहाँ गए। अब बाबू ऐसा है कि अपन मैदानों में जाओ तो सर हवाओं की आवाज आती है। पहाड़ों पे जाओ तो झरने गिरना बड़े बड़े उनकी आवाज आती है, उनका साउंड अलग आता है। तो सब जगह क्या अलग अलग साउंड, अलग अलग आवाज आती है। वो नहीं कह। अब चलो ये देखते को अमेरिका को कौन सा साउंड जपने को है, पहली बार देखने को मिलेगा। चलो लगाते हैं। Hello. For some reason, I woke up next to a tree this morning, and that reason could be because I couldn't get to sleep in my actual bed, because for the first time in as many days, it was autumn. And that meant that my bedroom was completely silent, and you might be watching this thinking, I'm really confused right now, and if you are, you could be British. सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कहना आपका कि सर्दी के मौसम में ये पंखे हैं, एसी, ये सब चीज़ें बगल हो जाते हैं और दूर दूर से जो है कहा कि क्या आवाज़ आती तो नींद खुद ही आती। Because in America, for the most part, your bedroom and most of the rooms in the house, especially in the summertime, are not silent. There's this little thing called white noise. And white noise is this thing that seems to permeate American society in general, and something that Americans tell me that they can't do without when they go to bed. And for me, it's the other way around. बाबू ये लोगों का सिस्टम ऐसा रहता है कि हमारा वहाँ एक अंकल है, जब तक अंकल हैंगे तब तक उनको कर पंखे की आवाज आती है, तो उनको नींद नहीं आती है। ये जो सिस्टम है उनका यार, कोई किसी का कोई आदत पड़ जाती है ना भैया, उस आवाज की वजह से उनको क्या होता है, वो ये समझते हैं जैसे मैं अकेला नहीं हूँ क्या, तो वो ठहरी आवाज आती है, समझते मेरे साथ कोई है नहीं, उनको डरने लगता है, महसूस करते होंगे, महसूस ये करते। तो you know, in Britain, I grew up with just really quiet, peaceful bedrooms, with the exception of my dad snoring in the next room. I sort of got used to that for 26 years. I got used to this sort of just, I don't know, this general silent ambience. Is that even a thing? And then when I moved to America, bear in mind this was in the winter, so it hadn't yet happened yet, but by the time the summer started to heat up, we were putting on the air conditioning units, right? And of course, famously, we still haven't come around to that idea in the UK. बाबू ऐसी बात है कि उनका यूके देश है, वहाँ पे क्या एयर कंडीशनिंग की जरूरत पड़ती है नहीं, क्योंकि ठंडा देश है वो अमेरिका गर्म देश है, वहाँ तो जाहिर सी बात है पड़ेगी। यार ये वो जिसमें पिताजी खर्राटा का बोला, वो तो सब दुनिया में ऐसी चीज है कि जो परेशान। It just became this thing. It sort of happened to me that as soon as I moved here, without realizing it, was falling asleep to white noise. And I think after about a year of that, it sort of clicked that this isn't how things used to be. So in America, every autumn, it takes me right back to my childhood. Briefly, because then the winter turns up and you have to have a fan on in the bedroom because the heating is too hot. It's like a catch-22. But while I was laying there awake at night and before I fell asleep next to this tree, I had some thoughts about some of the other sounds that I commonly hear in the United States that I would never have heard in England. And if you listen carefully, you can probably hear one of those sounds right now. Hear that? That is, well, North American bird species, most likely anyway. अब क्या साहब का जैसे कि आप कहीं भी जाओ, हर जगह के पंछी पक्षी जो है अलग अलग होते हैं, तो अब जब अलग होते हैं आवाज़ भी अलग हो सकता है कि आप जिस जगह हो वो पक्षी का आवाज़ अलग हो, और जहाँ अभी आप हो वहाँ पक्षी का आवाज़ अलग हो। Because in the UK, the bird that you would hear most commonly is a wood pigeon. So it makes that really distinctive sound all across most of Europe, I think. And it just goes, whoop, whoop, whoop.
whoop, whoop, whoop. I realise I'm making bird sounds in public. Here, you don't really hear that sound very often because wood pigeons aren't native to North America. And instead you'll hear the sounds of many birds. I mean, here in the Midwest, you've got cardinals, you've got the red-winged blackbird, you've got mourning doves, which of course comprise about 33% of my own family. And so the general bird ambience differs greatly between Britain and the United States. And of course, America, being the giant country that it is, boasts a stupid amount of birds and an amount of stupid birds. So that's every country. जो ये बात बचा रहा साहब, ये तो बहुत हुकामत से बात है। इसमें हमने को कोई अचंभा ही नहीं हुआ। हमारे को सब जगह का अलग अलग हिसाब। सर आप तो क्या दो देशों का अलग अलग फर्क बता रहा हूँ। अब हमारा वहाँ तो क्या दो राज्यों में जाओगे तुम तो अलग अलग पंछियों की आवाज आने लग जाएगी आप। इतना बड़ा उलटफेर हो जाएगा जरा से। And you know, the noise or the sound, the ambience that they produce differs immensely depending on where you are in the country. So I can only speak for here. I've seen a cardinal sitting outside of my house on a telephone wire dropping a massive but all the time chatting. So if you are the sort of person who's really into birds, which is all English people once they pass the age of 40, then if you move to America, get yourself a bird book. So those things still, I don't know if they exist, but look it up on the internet, which birds are in your local area. And then what about the sound that you hear at a zebra crossing / crosswalk? Again, those differ all throughout the United States. Where I live, you hear things like, the crosswalk sign is on, the crosswalk sign is on, and we get the picture, mate. And I've been to places here where it almost sounds like a machine gun, like, right, which really makes you want to run across the road, so at least it gets its job done efficiently. अब ये बात तो सही है, हर जगह सिंगलों के नियम भी अलग अलग। वाकई में। वो यूएई में का सिंगल है, यहाँ का सिंगल है। अपने वाला के। हाँ, अपने अलग है। बाबू ये सब छोड़ो, तुम तो जो आवाज निकाली थी वो निकाल के दिखाओ यार। But it is mildly terrifying. In Britain, I can't really remember how it goes. It's something like beep, 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 beep. Probably making that up. Producers, can we look up what it sounds like in Britain? अच्छा वो टी 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 बोलता है यार। अच्छा। ये चक्कर है वो क्या है, वो इसलिए है कि पब्लिक अलर्ट हो जाए कि सिंगल चेंज हो गया। ये मामला होगा। सही है उनकी जगह, सही। Over the last 2 years, one sound that I've heard commonly here in Chicago is my cat, but also tornado sirens. Tornado sirens go off when we're put into a tornado warning, and that's when we have to go down to our basement, get away from all the windows. वो एक चेतावनी होती है। बाबू वीडियो देखी यार अपन ने बाउंडरों की यार। अब वहाँ पे क्या बाउंडर ज्यादा आते हैं, तो वो सायरन की आवाज देना भी जरूरी हो। सही करते हैं उनकी जगह, क्योंकि वो चेतावनी है कि भाई बाउंडर आने वाला है, पहले अलर्ट हो जाओ तुम। डॉक्टर साहब आप ये आवाज सुनते हो आपको महसूस होता है। And just sort of stay put until the local authorities tell us that we can leave. In fact, my cat is well drilled in this by now. And you might be thinking, ooh, Lawrence, why are you including tornado sirens and not tornadoes themselves? And the reason is simple, because while tornadoes might be devastating when they do in fact strike, Americans are likely going to hear more tornado sirens in their life than they are tornadoes. अब बाबू जाहिर सी बात है, अपने वहाँ तो ऐसी कुछ चीजें होती नहीं है नहीं। अब उनका वहाँ आए दिन ऐसे बवंडा वंडा ऐसी चीजें आती रहती हैं, तो उनको सुनने का मौका लगती है सायरनों का, है कि नहीं? उसके आदी हो गए वो। And come to that, Britain isn't itself without the odd twister, and I'm not just referring to the sweaty board game. As a matter of fact, England experiences more tornadoes per square mile than any other country on Earth. It's just that none of them are strong enough to feature in films with Helen Hunt, so they very rarely cause fatalities. वो ये कहना चाह रहे हैं, हमने बाउंडर को बताना भी इसमें जिस हिसाब से ये बात कर रहा है बहुत भयंकर होगा। ये अंदर लगा जैसे। I promise I am happy about that. This is just my default face. But the tornado siren is most certainly something I'd never heard until I moved to the United States, although that's not entirely true. Because in Britain we do have such sirens, and they were once used for alerting us to air raids, and nowadays to another weather phenomenon, floods. But I can tell you unequivocally that nothing prepared me this year for the moment when I was just standing in a wooded area with my wife, and all of a sudden... That's not a plane in a heavy wind. That is the siren, just my impersonation of it. And
It was deafening. It was deafening. I genuinely thought the Germans were coming until I looked at my calendar, realized it was an invisible watch and that it बाबू भाई वो थे वो ब्रिटेन के रहने वाले। अब वो उनको सायरन की आवाज आती रहती थी, उनको ऐसा लगा कि जर्मनी ने हमला कर दिया, उनको आदत पड़ गई थी। अब उन्होंने गाड़ी देखा, अपन नए जमाने में जी रहेंगे, अमेरिका में अपन तो है। मजाक हो गया उसके साथ। वो क्या आएगा अपने साथ में मजा कर अपने मजे ले जाए वो। वही तो थोड़ी होता है। It wasn't the 1940s. So perspective is everything. I mean, it's always nice when you can just sit there and say, thank goodness it's just a tornado. Anyway, normally when we're hankering down in that shelter, otherwise known as the basement, you do find yourself morbidly listening out for that whoosh sound, right? Or at least I do. But most of the time, all you're left with is crickets. अरे यार मतलब उसका कहने क्या मतलब हर घर में अमेरिका जो शहर है वहाँ हर घर में हम दिखाने रहते हैं। मतलब ये अगर बाउंड्री आता है अब दिखाने चीज़ दिखाना चाहिए। बहुत जरूरी है भी यार। अब साथ साथ में बाबू भाई क्या बाउंड्री की आवाज सुनो साथ में बैठ के। इतने दुख मुसीबत में आवाज सुनो, क्या कर सकते हो, तुम कुछ कर नहीं सकते हो। ये रास्ता है। Not literally, that would be weird. Although it does bring me on to another point. Yeah. Crickets. I'm not talking about the sport. Of course, we hear that all the time in the English summer. Not so much here. But crickets, the insect. झिंगुर। We've talked about these before, of course. The sound that they make is very prominent on this side of the ocean. In Britain, we don't have that ambience, and it's a blooming shame. अब ये जो आवाज बजा रही है झिंगुर, अब आप ये झिंगुर की आवाज बजा रहे हैं ना, तो ये झिंगुर हमारे भी होते हैं, लेकिन कब किसने सिर्फ बरसात में, इसके अलावा कोई आवाज नहीं आती। लेकिन मानो सर कि हमारा रात में अगर आके बैठ गई तो सबकी नींद हराम ही, रात भर टर टर करते रहेगा, नींद हराम है सबकी। पूछो मत, भयंकर यार। Because it's a very relaxing sound. I've never really articulated हमारे लिए नहीं भी, हमारे लिए तो crickets on this channel in the past, but it is. It's a sound that I can actually sit there in the park listening to crickets, which is weird because this is insects mating or at least sending out a mating call, and I'm there casually listening in. Imagine if it was humans and I was doing that. It seems like we have alternative rules when it comes to other members of the animal kingdom. I'm not complaining, don't get me wrong. I don't want to do that to humans who should keep themselves to themselves. So those are just some of the sounds that I thought of when I woke up. ये बात बिल्कुल सही है। अपन जब कभी सुनसान जंगल में या कोई ऐसे सुनसान खेत में जाते हैं तो ये ऐसी आवाज अपने सुनने में आई जाती है, कहीं ना कहीं तो आई जाती है। सही है। अब वो सर कह रहेंगे कि इंसान संभोग कर रहा है और उनकी आवाज़ें सुनो तो मजाक अच्छा करते हैं सर यार। मजाक का अंदाज बहुत निराला है इनका, अलग हटके। बहुत बढ़िया है। Next to that tree this morning, and Mom, if you are watching, I didn't really wake up next to a tree. It's just for the narrative of this video. It's a weird narrative. That's it for this episode. Let me know in the comments below some of the sounds that you hear on a daily basis that you don't think other people will hear in other parts of the world. I'm Lawrence Brown. You can follow me on Twitter at LostInThePondUS, and don't forget to subscribe to this channel so that I don't have to. One sound that my patrons hear every week is the secret sound of my voice on our secret live streams. If you would like to become a patron of Lost in the Pond, you can do so today at patreon.com/LostInThePond. Until the next video, goodbye. देख रहे भैया, सबसे पहले तो मैं जिस अंदाज में जिस कॉमेडी में तो कॉमेंट्री करता है नहीं, वाकई में तेरा उसका मैं दीवाना हूँ। तेरा अंदाज और तेरा बात करने का ढंग और तेरी वो हर चीज़ वाकई में इतनी प्यारी लगती है कि जब तू सामने होता है नहीं तो तेरी वीडियो सब जी नहीं चाहता। इतनी बेहतरीन कॉमेडी करता है, इतनी बेहतरीन डायलॉग बोलता है। अब वीडियो की बात करें अपन बाबू भाई, तो कुछ आवाजें क्या है अमेरिका में सुनने को मिलेगी, अपने वहाँ तो मिलने ही नहीं है। बात बिल्कुल पते की करी सही तरीका लगा समझाने का। भाई अब अमेरिका के तुम्हारे जो जंगल जो आवाजें हैं वो तो मुंबई है, अब वो जो चीज़ें अमेरिका से का ये तो है नहीं कि जो माँ है तो वो यहाँ हुई बस। सही बात, अलग अलग रहेगा माँ, अलग अलग रहेगा। क्या ऐसा आपका ये बात सुनने बिल्कुल सही बोले कि जैसे थोड़े के लिए मैं तो बाउंड्री का आवाज़, बाउंड्री का जो सिंगल वाकई उसकी आवाज़ यहाँ सुनने को नहीं मिलेगी, वो आवाज सिर्फ वही वो कहीं नहीं होगी। और वो जैसा कि उन्होंने सिग्नलों का बताया तो अपने वहाँ तो खाली कलर बदलते हैं लाइटों के, आवाज तो आती नहीं। वो उनका आवाज वाला है, बस यही है अपना, ठीक है, अलग अलग मामला। तो बस एक बात तो है कि वो आवाजों का जो सिंगर का जो आवाजों का है वाकई मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वो कहेगा इंसान जब मरते वक्त में वो हो जाता है तो वो जो आवाज आती है ना उससे वो
अलर्ट होने को सिग्नल का कलर चेंज हो गया, अपने को रुकना है या अपने को चलना, हाँ ये वो बताएगा अलग बात। और बाबू भाई टोर्नाडो का भी सिग्नल बाकी बखूबी सही साइड तरीके से बताया उन्होंने। मान लो अपन क्या पे वीडियो शूट कर रहे हैं और एकदम टोर्नाडो आ गया तो हम लोग तो मालूम भी नहीं पड़ेगा, यहीं के दोस्त तो रहेंगे अपन तो, ठीक है जी। बाकी में साहब इन श्रीमान जी जो की जो वीडियो है, जितनी बार इनके सुनता हूँ, एक तो इनकी कॉमेडी भी इतनी अच्छी है, जानकारी इतने सही हसीन हो देते हैं कि वाकई में ये सुनने को ये नहीं लगता कि एक ने एक और सुनो, एक ने एक और सुनो, इतनी बढ़िया कॉमेडी करते हैं। बाकी में इसी तरह की और कोई शानदार वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।